ऐसे ही जो कि बात कर रही है कैटलॉग मैनेजमेंट है जो हमने बात कर ली ऑलरेडी। डेवलपर टूल्स, तो डेवलपर टूल्स जो है AWS कुछ प्रोवाइड करता है जिसमें कोड बिल्ड कमिट डिप्लॉय पाइपलाइन एक्सेस, इसके अलावा भी है कि आई एम नॉट लिस्टेड ऑल ऑफ देम बिकॉज़ दे आर मोर रेलेवेंट। तो जैसे आपके पास कोड बिल्ड है, ठीक है, तो मतलब यू वांट टू कोई कोड डिप्लॉय करेंगे, नोड जैसा कोड है या जावा का कोड है या कोई भी कोड है, तो आप बिल्ड करेंगे ना। जब बिल्ड करेंगे तो उसकी कोई क्या कहते हैं, आप उसकी बिल्ड बनाएंगे, ठीक है, जो कि आप डिप्लॉय करेंगे। तो जो बिल्ड का जो काम है वो प्रोवाइड करता है, और इसके अंदर आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्टेंसेस देता है कि आपको अभी करना है, जैसे लिनक्स का हमें उसको कंपाइल करना है अपने कोड को, विंडोज में करना है, किस लैंग्वेज पे करना है, सारी इंजीनियरिंग सिस्टम में अवेलेबल है। कोड कमिट, कोड कमिट अगेन बिट बकेट है, बिट बकेट पता है ना, बिट बकेट राइट। तो मुझे लग रहा है सब सो गए कुछ जगाना पड़ेगा। ओके, स्लाइड एक्चुअली कोई भी है, इतना कंटेंट आज तक हुआ है। I think they would be happy to read. मेरे ख्याल से अगर आप इसमें कोई ऐसा वो है, मैं एक्चुअली हैंड्स ऑन की हैंड्स ऑन टॉपिक टेक्स्ट में आया है, तो दैट्स व्हाई एक्चुअली गोइंग टू टुवर्ड्स थ्योरी बहुत होगी। एक्चुअली इट्स वेरी मच देखिए, अगर बस हैंड्स ऑन के बाद में टाइम बचा तो वी I कैन, think तो ये इंट्रोडक्शन की बात करना चाह रहा था, दैट्स फाइन, मशीन लर्निंग है, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, ये स्टडीज में भी देखेंगे। यार मैं तो चाह रहा हूँ हैंड्स ऑन से, तो एवरीवन एग्रीज राइट, वी कैन प्रैक्टिकल, ठीक है। इसका वो है I think we have covered like major services in India, right? So what I want is कि मैं एक यानी यूज केस बना रहा हूँ यहाँ पे, जो कि मुझे एप्लीकेशन बनानी है, वेरी सिंपल सी एप्लीकेशन, ठीक है। और व्हाट आई वांट यू गाइस टू डिजाइन अ वेरी बेसिक एक्शन फॉर दैट, कंसिडरिंग दिस सर्विस। अब उसके लिए जरूरी है कि इस सर्विस का नाम पता हो, ठीक है। व्हेन इट्स अ ओपन बुक एग्जाम यू कैन जस्ट गो एंड सर्च फॉर इट, बिकॉज़ ये इस तरीके से रिस्पॉन्सिव सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो कंसिडर के मेरे पास एक यूजर है, ठीक है, he wants to, and there is basically उसको यहाँ पर जाके लॉग इन करना है, ठीक है। इसमें व्यक्ति इसका जो है वो ईमेल है और पासवर्ड, ठीक है, ईमेल और पासवर्ड, और सबमिट बटन। अभी मैं आपको यूआई इंटरफेस दिखाने के लिए बात कर रहा हूँ, जस्ट यूजर लॉगिन करता है, ठीक है। तो जब ये लॉगिन परफॉर्म करता है तो एक मतलब अब ये मैं पूरा इसको कंसीडर करूँगा कि दिस इज होल्ड एवरीवेयर, ठीक है, सिवाय यूजर के या उसकी जो एप्लीकेशन है या उसका सॉरी वेब पोर्टल है, किसी जगह से वो ये हमारी जगह AWS के अंदर लॉगिन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। लॉगिन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो है he actually gets information in return. Sorry, in return it will actually going to have access to it. या एक्सेस कर लिया, तो भाई वो उसमें लॉगिन करता है और एक्सेस उसको मिलता है, ठीक है, उस एप्लीकेशन का। और उस एक्सेस टोकन के थ्रू या उस एक्सेस के थ्रू जो है वो अपनी प्रोफाइल में करना चाहता है, गेट यूजर, ठीक है। और जब ये रिक्वेस्ट एक्सेस करता है तो उसको रिस्पॉन्स में जो है वो इम्पोर्टेंट थिंग इज कि वो सिर्फ एक्सेस अपनी ही प्रोफाइल कर सकता है, किसी और की प्रोफाइल एक्सेस नहीं कर सकता। अगर मैं लॉगिन करूँ तो मुझे मेरी प्रोफाइल करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंस है, ठीक है। यूजर है, ऐप है, वो जो भी है लॉगिन करता है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद जो है वो उसको रिस्पॉन्स में टोकन मिलता है, एक्सेस मिलता है। उस एक्सेस टोकन के थ्रू वो दोबारा यूजर के पास जाता है,
वो बोलता है कि एक्सेस मेरे पास एक्सेस है सिस्टम का, मुझे जो है मेरी प्रोफाइल ऐड करो, तो वो जो है उसको प्रोफाइल ऐड कर देता है। अगर मैं इसका एक बेसिक आर्किटेक्चर बनाना चाहूँ तो आपको थोड़ा सा मतलब करेंगे, या तो आप पेंसिल वगैरह कर दें या ड्रॉ.io वेबसाइट है, शायद उससे आपने कर दिया, या अगर आपने उसकी पेंसिल वगैरह या पेन वगैरह यूज किया, व्हाटएवर यू फील बेटर। आई जस्ट वांट टू लाइक गो टू एवरीवन एंड सी कि आपको क्या सोच है। I don't want to spend much time on that. Just a very little story exercise.